Hi friends, welcome back to my channel. Today we will see some important MCQs which always ask in examination, that is विलियम वर्ड्सवर्थ. विलियम वर्ड्सवर्थ के कुछ हम क्वेश्चंस करेंगे आज. ओके, सो लेट्स स्टार्ट नाउ. Trailing clouds of glory do we come from God, who is our home. This line is taken from which of the following poem. ये जो लाइन है वो वर्ड्सवर्थ के कौन से वर्क से ली गई है? सो द करेक्ट आंसर इज इमॉर्टलिटी ओड. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ड्सवर्थ फेमस प्रीफेस टू लिरिकल बैलेड वाज. वर्ड्सवर्थ का फेमस लिरिकल बैलेड क्या है? वो क्या द प्रीफेस टू द फर्स्ट एडिशन ऑफ लिरिकल बैलेड्स, or the rejoinder to the Coleridge Biographia Literaria, or a separate supplement to the lyrical ballads, or the preface to second edition. So the correct option is here the preface to second edition of lyrical ballads. So the option number D. Then we are laid asleep in body and became a living soul. Which poem of Wordsworth having this line? So this line comes in Tintern Abbey. टिंटन एबे इस पोएम में लाइन आती है. देन नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई इज द ईयर 1798 टेकन टू बी द ईयर ऑफ बिगिनिंग ऑफ रोमांटिक मूवमेंट. ऐसा क्या हुआ था जो 1798 को रोमांटिक मूवमेंट की बिगिनिंग मानी जाती है? सो बिकॉज इट वॉज द करेक्ट ऑप्शन इज बिकॉज इट वॉज द ईयर इन विच वर्ड्सवर्थ लिरिकल बैलेड वॉज पब्लिश. सो द करेक्ट ऑप्शन इज हियर ऑप्शन नंबर सी. नाउ वर्ड्सवर्थ वॉज पॉपुलरली फेमस एज द पोएट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग. तो वर्ड्सवर्थ को लेक पोएट से जाना जाता है, और वर्ड्सवर्थ के साथ दो और पोएट आते हैं, उनके कंटेम्प्रेरी है. तो आप कमेंट करके बताएं कि वो कौन से राइटर है जिन्हें लेक पोएट कहा जाता है, या लेक डिस्ट्रिक्ट से आते हैं वो. देन वर्ड्सवर्थ रोट अ सोनेट ऑन. वर्ड्सवर्थ रोट अ सोनेट ऑन मिल्टन. फॉर नेचर देन टू मी एज ऑल इन ऑल. This line is taken from which poem? For nature then to me was all in all. ये poem कौन से वर्क से ली गई है वर्ड्सवर्थ के? So the correct answer is Tintern Abbey. Now the next, after whom Wordsworth became the poet laureate of England. वर्ड्सवर्थ किनके बाद पोएट लॉरिएट इंग्लैंड के बने थे? सो द करेक्ट ऑप्शन इज रॉबर्ट साउदे. रॉबर्ट साउदे पहले रह चुके हैं पोएट लॉरिएट, और उसके बाद वर्ड्सवर्थ पोएट लॉरिएट बनते. Who accused Wordsworth for being lost leader? जब वर्ड्सवर्थ को लॉस्ट लीडर कहा गया है तो ब्राउनिंग ने उन पर सटायर करते हुए लॉस्ट लीडर उन्हें कहा है. देन वाई वॉज वर्ड्सवर्थ अक्यूज ऑफ, क्यों उन्हें लास्ट लीडर क्यों कहा गया है? बिकॉज ही एक्सेप्टेड द पोस्ट ऑफ पोएट लॉरिएटशिप ऑफ इंग्लैंड. और उन्हें ऐसा लगा कि सिर्फ पोएट लॉरिएटशिप के लिए वर्ड्सवर्थ उस तरफ चले गए. सो ही कॉल्ड हिम एज अ लॉस्ट लीडर बाय द Robert Browning. The next question, just for a handful of silver he left us, just for a riband his coat. Browning wrote these lines on Wordsworth. Wordsworth पे ये लाइन लिखी है लॉस्ट लीडर में. सो द पोएम कौन सी है, वो टाइटल कौन सा है जो रॉबर्ट ब्राउनिंग ने वर्ड्सवर्थ के लिखी है? वो है द लॉस्ट लीडर. But Europe at the time was thrilled with joy. France standing on the top of golden hours, and human nature seeming born anew. In these parts Wordsworth referring to, so the period of the French Revolution. But Europe at the time was thrilled. ये जो पोएम है, ये जो वर्क है, और इसमें की लाइन है वर्ड्सवर्थ का ये फेमस वर्क है द पीरियड ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन पे उन्होंने ऐसे लाइन्स लिखे हैं. देन नेक्स्ट सवाल आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ब्लिस वॉज इट इन दैट डाउन टू अलाइव बट टू बी यंग वॉज वेरी हेवन. What era of history these line refers to? Bliss was it in that town to live. So the correct option is to the period of French Revolution. Then, thy flash upon that inward eye, which is the bliss of solitude. These lines taken from which poem? तो ये वर्ड्सवर्थ के वेरी फेमस पोएम डेफोडाइल से ली गई है. They flash upon the inward eye, which is bliss of solitude. Now turns toward the next question. Next सवाल करते हैं, nature never did betray the heart that loved her. These are the line taken from which work? So the correct answer is lines are taken from the Tintern Abbey. The child is father of the man, and I could wish my days to be bound each to each by natural pity. So these lines are taken from my heart he leaps up.
ये भी वर्ड्सवर्थ के फेमस वर्क माई हार्ट लिप्स अप से ली गई है. हु वॉज वेयर द ऑथर ऑफ द लिरिकल बैलेड. तो लिरिकल बैलेड जो है कोलैबोरेशन में लिखा गया था वर्ड्सवर्थ एंड कोलरिज. वर्ड्सवर्थ प्रिल्यूड इज. वर्ड्सवर्थ का प्रिल्यूड क्या है? ऑटोबायोग्राफिकल पोएम है. कीप इन माइंड वर्ड्सवर्थ की ऑटोबायोग्राफिकल पोएम का टाइटल क्या है? द प्रिल्यूड. नेक्स्ट क्वेश्चन. To me, the meanest flower that grows can give thoughts that do often lie too deep for tears. This line is taken from which poem? So ये lines आती है वर्ड्सवर्थ की Immortality of Ode से. O joy that in our embers, it's something that doth live, that nature yet remember what was forget you. So this line is taken from the same work Immortality Ode. नेक्स्ट सवाल है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टर्न डॉटर ऑफ द वॉइस ऑफ गॉड. हु इज़ अ स्टर्न डॉटर? तो ये है ड्यूटी. ओड ऑन ड्यूटी पे लिखा गया है. विच इन हिज हैंड और अ डैश इन हिज हैंड द थिंग बिकेम ट्रम्पेट वेंस ही ब्ल्यू सोल एनिमेटिंग स्ट्रेन. सो दिस इन हुज हैंड अकॉर्डिंग टू द वर्ड्सवर्थ. तो वर्ड्सवर्थ ने मिल्टन के ऊपर जो पोएम लिखा है उसमें वो कहते हैं कि मिल्टन के बारे में ये लाइन सुनने कहे है कि is a blue soul animating strain. Then the next question, the sweetest thing that ever grew beside a human door, and the correct option is Lucy poems. ये Lucy poem से लिया गया है. Dust as we wear the immortal spirit grow, like harmony in music there is dark, instructable workmanship. So these elements or these lines are taken from the prelude. Which type of a poem is a Ladomia? So the Ladomia is a narrative poem. Then me this uncharactered freedom tries, I feel weight of chance desire. This line is taken from which poem? Ode to Duty. Now the remaining question also we will do in the same video. To cottage which was named the evening star I gone. So this cottage is referred to of Michelle or Michael, we can pronounce it. Our birth is but a sleep and a forgotten the soul. This rise with us, our life star hath had elsewhere a stage setting. So these come from afar. These lines are taken from Immortality of Ode. This is how the some important questions on Wordsworth. For coming video, like, share and subscribe as well as press bell icon for the notification.